A very good afternoon everybody. Welcome back. खा भी आए हो सारे? A very good afternoon. I welcome you all again to Launchpad IAS Punjab ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ Launchpad Education Punjab Sunday ਮਹਾ ਮੈਰਾਥਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮਹਾ ਮੈਰਾਥਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ right new batches for IAS and PCS have already started so ਤੁਸੀਂ batches ਵਿੱਚ enroll ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and you can solve your doubts regular classes live sessions online offline ਤੁਸੀਂ attend ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ with the best of teachers you can resolve your queries then 10% discount is being offered on all the courses on the occasion of Baisakhi this is the discount code Baisakhi 10 ਤੁਸੀਂ ਇਹ discount code avail ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ launchpad.in ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦੈਨ launchpad ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਓਕੇ ਇਟ ਵਾਸ 1 hour ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ planner for the day already classes ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ from here we are starting this and next ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ एक होर क्लास रहेगी ਤੁਹਾਡੀ कोस्टल लाइन्स की दैन पंजाब कल्चर के उत्ते पंजाब कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ क्लास होएगी दैन लॉन्चपैड IAS ਤੇ 4:30 ਵਜੇ is going to be a session on history MCQs ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਿਤ ਸਰ ਲੈਣਗੇ ਰਾਈਟ then this is how you go and buy the courses link ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਐਨੀ ਆਫ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਮ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20,000 ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ then additional 10% discount ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਸਾਖੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ then additional more discount of 10% is on one time payment and ਠੀਕ ਹੈ then ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ then you have to add it to the cart ਠੀਕ ਹੈ next this is ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਦੱਸਿਆ ਲੰਪ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ you have more discounts right and this you have to fill the detail and ਤੁਸੀਂ order ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ place ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ then you can call always call on our numbers we'll assist you right okay moving on speed बहुत तेज रहेगी we have to discuss almost 100 questions in this session पहले जड़ा है session ਦੇ ਉੱਤੇ 90-100 question already हो चुके हैं this is going to we are going to continue that session on current affairs जो 6 months ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ क्विक आंसर्स देंगे फटाफट स्पीड ना चलेंगे फर्स्ट MCQ which Indian Navy ship participated in the PCS exercise with Russian Navy ship in Arabian Sea in January 2022 INS Vikrant Prakrit Kochi and then we have is Magar I want quick answers फटाफट आप आगे चलना है and try to learn the things जिद्दां ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ठीक है okay A C okay answer to this question is C INS Kochi Indian Navy ship ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ PCS exercise another form of question PCS exercise जो है इंडियन नेवी ਦੀ किस कंट्री ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ it is conducted with Russia right moving on what is the theme of digital WEF's Davos agenda World Economic Forum the Davos agenda 2022 summit state of economy state of world state of universe and then we have a state of rest of the world theme of digital World Economic Forum the Davos agenda 2022 this summit was conducted by World Economic Forum right so what was the agenda it was state of world right next what is name the Indian participant who has been facilitated with best national costume award at Mrs World 2022 pageant important usually ਆਪਾਂ
मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के नाम याद कर लेने, लेकिन अगर ऐसा कोई भी होर इवेंट हो रहा है वेयर बाय इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, आंसर इज बी, नवदीप कौर. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जड़ा है वो किन्ने जितया है? ऑप्शंस, डियाना हेडन, युक्ता मॉकले, एंड देन वी हैव इज मानुश्री चिल्लर, एंड देन वी हैव इज शैलन फोर्ड. ओके, डी. ओके, आंसर इज डी, शैलन फोर्ड. मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड फोर्ड दी गड्डी च बह के गेड़ी लाऊगी. ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग, दिस इज हाउ यू लर्न. तो तुहानू पता है स्टार्टिंग में तुहानू दस्सिया सीगा शगुन स्कीम दे तहत द स्टूडेंट हु इज गिविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट आंसर्स विल बी गिवन अ शगुन ऑफ 501 साडे वालों. दिस इज एन इनिशिएटिव. ठीक है, पहले भी तुहानू मैं स्कीम दसी है कि 2-3 सैशनस लाओ संडे दे, संडे मैराथन दे, तो तुसी अपनी फीस साडे तो ही पूरी कर लियो. ठीक है, मूविंग ऑन. द इन्फिनिटी ब्रिज रिसेंटली जिन्हों न्यूज़ में देखा गया सी विच हैज़ ओपनड फॉर पब्लिक ट्रैफिक is built in which of these places? Dubai, London, Austria, and then we have is Germany. Very quick answers, Dubai. Okay, answer is A. Infinity bridge shape जड़ी है infinity बनी हुई है, that is why इस bridge नू ए नाम जड़ा है suggest किया गया. Next, the Commonwealth Games 2022 will be organized in dash the United Kingdom. Again Commonwealth हो गए, तुहाडे को पिछले किथे कंडक्ट की जा रही है, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इट इज बीइंग कंडक्टेड इन बर्मिंघम यूके, राइट. ओके, मूविंग ऑन. एशियन गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज की जाएगी सितंबर 10 to 25 2022 इन रशिया, चाइना, इंडिया, एंड देन वी हैव इज जापान. एशियन गेम्स 2022 विच कंट्री? अगेन इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है, कितने कंडक्ट की जाएगी? इट विल बी कंडक्टेड इन चाइना, राइट. ओके, आई एम सीइंग थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेलकम्ड इन द कमेंट्स. मूविंग ऑन. माघ मेला 2022 एनुअल रिलीजियस फेयर है, इट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एंड देन वी हैव इज केरला. माघ मेला 2022 कोई भी इवेंट फेस्टिवल विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट, स्पेसिफिक स्टेट सीन इन न्यूज. आंसर इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, हाइड्रोफिस ग्रेसियस अ रेयर स्नेक हैज बीन स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, यूपी. तो पहले भी मैं सैशन दसिया सी भयंकर नाम इन्होंने पा देने, न्यूज़ विच देखा गया सी केड़ी स्पीशी है, कित्थे मिली है, केड़ी एनिमल दी स्पीशी है, बर्ड दी है, फ्लावर दी है. ठीक है जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल दोज डेंजरस नेम्स. ठीक है, देन क्वेश्चन, हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस वाज सीन इन न्यूज़, ए किदी स्पीशी है? बटरफ्लाई, स्नेक, ग्रास, राइट. मूविंग ऑन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड इनइक्वालिटी किल्स? इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जड़ी है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP, RBI, एंड देन वी हैव इज ऑक्सफैम. विच इज द करेक्ट आंसर? ओके, वेरी गुड. आंसर इज डी, ऑक्सफैम इंडिया, राइट. ट्राई टू लर्न द थिंग्स. लंबा सेशन है, 100 के करीब MCQs है, तो रिविजन ईजी बनाने वास्ते लर्न दिस. विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च जागरूक वोटर कैंपेन? दिस वाज एट द टाइम ऑफ इलैक्शंस, जो काफ़ी सारी स्टेट्स में इलैक्शन चल रहे थे इंक्लूडिंग पंजाब. तो जागरूक वोटर कैंपेन जड़ा है इट वाज लॉन्च टू क्रिएट अवेयरनेस किदे द्वारा? फेसबुक, ट्विटर, देन वी हैव इज यूट्यूब, एंड देन वी हैव इज इंस्टाग्राम. फर्स्ट लेट अस सी कौन सब तो पहले आंसर दिंदा है. ओके, ट्विटर, इंस्टाग्राम. दिस वाज लॉन्च्ड बाय बी ट्विटर. ओके, moving on. Next, which of the following panchayat is said to become the country's first sanitary napkin free panchayat? Important. Again, previous session दी drill नु follow करो, जो questions आए marking important उन्हें याद कर लो. कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, and then we have is
Goa. First answer we have got from Nikhil Agrawal says Kerala. Nitika Bahal, Sakshi, Raleigh, correct. सारे चंगे काम केरला विच होंदे हैं, right? First, sanitary napkin free panchayat. Next, the 9th Women National Ice Hockey Championship 2022 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ organize ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? लद्दाख, लाहौल and Spiti, Kerala, and then we have is Karnataka. Women National Ice Hockey. Okay, B. You say B, Laul and Spiti. Next, the famous Indian tigress, important. Indian tigress named Collarwali. Recently, it has passed away. It belonged to which tiger reserve? Pench, Bandipur, Kanha, and then Corbett. Go on. Collarwali, Indian tigress, and contribution रहा है to the tiger population of the country. It is a Pench. Pench किथे है? Which state? Madhya Pradesh में. Okay, we have already got the answers. Very nice. 29 cubs. Very nice. The ministry which has organized 26th CISO deep dive training program under Cyber Surakshit Bharat initiative. Cyber security layi this initiative has been launched. Deep dive training program किस ministry का initiative है? Electronics and IT, Culture, Defence, Development for North Eastern Region. Which is the correct answer? नाम तो पता लग रहा है? It is Ministry of Electronics and IT. Okay. Okay, very good. Next, under SpaceX Transporter 3 mission, which of the following African nation has launched its first made in Africa satellite? Very important. Made in Africa first time किस country ने satellite launch की थी है and किस initiative दे under है? SpaceX दे Transport 3 mission दे under. It is being launched by Zambia, South Africa, Nigeria, and then we have is Egypt. Okay, answer is B, South Africa. Africa the satellite, African made, it is South Africa, right? एक बार session ਨੂੰ share कर दो with your friends, with your Telegram groups, WhatsApp groups, for that matter Facebook पे भी share कर दो. Okay, moving on. Next, the National Disaster Response Force is celebrating which edition of its Rising Day on January 19th, 2022? और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आपने राइजिंग डे किस दिन सेलिब्रेट कर दिया? रिमेंबर दिस, जनवरी 19, 21st, 17th, 14th, एंड देन वी हैव इज 19th. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जी है, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है तो उधर रिस्पॉन्स वास्ते दिस इज फॉर्म्ड. इट इज सेलिब्रेटिंग इट्स 17th एडिशन. इंपॉर्टेंट, ओपन डेटा वीक कंडक्टेड from this to this in January by Smart Cities Mission. Smart Cities Mission ਦੇ तहत Open Data Week ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ conduct ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ by which ministry? Housing and Urban Affairs, Employment, Jal Shakti, and then we have is IT. देखते हैं कौन सब तो पहला आंसर करता है. ओके, खा पी के आए हो तुसी सारे? लग रहा है कि एनर्जी थोड़ी जी घट है. Ministry of Housing and Urban Affairs, Smart Citizen Mission, Open Data Week, whereby states विचो data जड़ा है उन्होंने किया जाएगा collect related to कि smart cities विच कितना contribution वो कर रहे हैं अपनी city नू develop करने लिए. ठीक है जी. Moving on, which country proposed P3 Pro Planet People Movement during World Economic Forum Davos Agenda 2022? प्रो प्लैनेट जिहदे विच लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होएगा प्लैनेट नू डिवेलप करने लई. प्रो प्लैनेट इज रीसेंटली सीन इन न्यूज़. किस कंट्री ने प्रपोज किया है? जापान, रशिया, चाइना, एंड देन वी हैव इज इंडिया. आंसर इज डी, इंडिया. इंडिया कोई भी इनिशिएटिव लेगा इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. मूविंग ऑन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया? क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एसेट्स एटलस, जिस एटलस विच
मैंशन किया जाएगा इंडिया के मैप विच वो किहड़ियां स्टेट्स है विच आर मोर प्रोन टू हैजार्ड्स. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, कल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एंड देन वी हैव दिस जल शक्ति. करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. नेक्स्ट, द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस सारे ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. हुण इत्थे एम्प्लॉयमेंट लिखे, सोशल आउटलुक दे नाल तुसी रिलेट कर सकते हो बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. जिदा का नाम दिता है, अगर पता ना होए तो तुसी आंसर गलत मार्क कराओगे, राइट. कुछ ऐसी एक्सैप्शनल इनीशिएटिव्स है, कई बार उन्होंने मिनिस्ट्री पता नहीं लगती. मोस्ट ऑफ द टाइम सानू इनीशिएटिव तो पता लग जाता है ऑप्शंस च मिनिस्ट्री केड़ी है, ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग ऑफ 2022 हेल्ड वर्चुअली ऑन जनवरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जनवरी 2-3 महीने पुराने करंट अफेयर्स जोड़े है, एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आर एडवाइज टू कंप्लीट. 6 मंथ्स तो बाद उदों करो जो तुहाडी 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स एकदम पक्के हो गए, राइट. सो इट इज चेयर्ड बाय रशिया, चाइना, जापान एंड इंडिया. आंसर इज बी, चाइना, राइट. ओके, पीयूष गोयल, इंडियन शेरपा, करेक्ट, वेरी नाइस, काफ़ी अपडेटेड हो. Which word has been chosen as the Oxford University Press Children's Word of the Year? Vaccine, immunization, anxiety, delta. हर साल दे एंड विच वर्ड ऑफ द ईयर जिहड़ा है वो डिक्लेयर किया जाता है. सो 2021 दा वर्ड ऑफ द डे जिहड़ा है दैट वाज वर्ड ऑफ द ईयर जिहड़ा है दैट वाज वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, एंग्जाइटी, डेल्टा. आंसर इज सी, एंग्जाइटी, ठीक है जी. ओके, जिदा का साल रहा सी ये सारे वर्ड्स जोड़े एसोसीएटेड ने, राइट. ओके, मूविंग ऑन. विच इंडियन स्टेट हैज़ जॉइंड हैंड्स विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इंप्रूव फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स? केरला, कर्नाटका, ओडिशा एंड हरियाणा. दिस क्वेश्चन आप वीकली विच भी कवर किया सीगा. देन दिस क्वेश्चन केम इन सम एग्जाम ऑल्सो वेरी रिसेंटली, राइट. सो इट इज विद विच स्टेट? Odisha. We have got the answer first. Answer is C, Odisha. World Food Program to improve the food security of farmers. Moving on. Which India's first women tennis superstar has announced retirement after 2022 season? 2022 के season तो बाद she will be announcing her retirement. Vijay Amritraj, Sania Mirza, Mahesh Bhupati, and then we have Som Dev. This was in news everywhere. Okay, that was Sania Mirza. Easy, tennis player, India di. India's first para badminton academy has been set up in which city? Lucknow, Kanpur, Surat, and then we have is Hyderabad. Para badminton academy, India di pehli. It has been set up in. Okay, let us see कौन पहले आंसर करता है. We have got first answer from Raman. Okay, Avneet Jaskaran, correct. Answer is A. It is set up in Lucknow. Next, important. ISRO recently tested an engine that will be used to power India's first human carry rocket under Gaganyaan human space mission. What is the name of this engine? हुन इंजन का नेम तुहानूं पूछा गया विकास, प्रगति, आयुष इंजन, संभव इंजन. हुण गगनयान के बारे अगर कोई मैनू कॉमेंट सैक्शन विच एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो यू आर मोस्ट वेलकम. स्टार क्वेश्चन, गगनयान के बारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन. इंजन केड़ा होएगा? विकास इंजन, राइट. सो अगर गगनयान करंट अफेयर्स विच आ गया है, इट इज़ ऑलरेडी, वैसे तो करंट अफेयर्स विच आता ही रहता है. सो यू हैव टू स्टडी द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गगनयान जो बहुत टाइम तो न्यूज़ में चल रहा है. It is for Mars. Okay, first manned mission, very nice, all the additional information. Next,
Which country recently test flighted Arrow 3 anti-ballistic missile system and its interceptors? Question for you. Arrow 3 test fired first time by Russia, Japan, Israel, and then we have is China. Okay, I am reading all your comments related to Gaganyaan. Very nice. Good. बहुत बढ़िया. Okay, so this Arrow 3, it is by Israel. Israel बहुत ज़्यादा news which है because of all these things. तो तुसी इस चीज़ नू याद रखना है. Moving on to the next MCQ. The report titled Banking on Electronic Vehicles in India has been released by which organization in collaboration with Rocky Mountain Institute and RMI India? नीति आयोग, RBI, SEBI and SBI. ऑप्शंस तो पता लग जाएगा. क्वेश्चन की रेलिवेंस. नीति आयोग कुछ कर दिया है, साढ़े वास्ते इंपॉर्टेंट है. RBI कुछ कर दिया है, साढ़े वास्ते इंपॉर्टेंट है. राइट. सो इट इज released by a नीति आयोग. Banking on electronic vehicles in India. Right. My question to you. Banking on electronic vehicles in India. ये तो हो गया report the title. ये report actually तो दसदी की है. What is this report about? My question is to you guys. What is this report Banking on Electronic Vehicles in India related to? Moving on. Government has merged the flame of Amar Jawan Jyoti with the flame of National War Memorial near India Gate in Delhi. Eternal flame of Amar Jawan Jyoti ਜਿਹੜੀ ਹੈ किस साल ਵਿੱਚ light ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1952, 1972, 1949, 1980. We are expecting Amar Jawan Jyoti जो कोई question ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ. And National War Memorial as well. Okay. You say that it is 1972. Okay, answer is B, 1972, not 1952. Okay. Moving on. Next, how many tableau will participate in Republic Day, which have already participated 2022 Republic Day parade, which 25, 20, 19 and then we have is 15. Time and again question ऐसा देखने को मिल जाता है, and these are the questions we cannot afford to mark wrong. Right? How many? 25. Okay, 15 तो नहीं. A. Answer to this question is A, 25. Okay, best केड़ा सीगा? Which was the best? Do you know? Best केड़ा सीगा? तुसी दसोगे answer. Next. When is National Girl Child Day observed? January 23, 24, 25 and then we have is 26. UP. Very nice. Okay. 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 plus 5. Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ 10 plus 5. Right? Okay. It is celebrated on 24th of January is celebrated as National Girl Child Day. Great. Moving on. Next question. Who among the following has topped the list of the most popular world leaders with the rating of 71%? Most popular top leader. First time by Ministry of Civil Aviation. Very good. Nitika Bahal. Everyone mark this. First time jada hai that was presented by which ministry? Ministry of Civil Aviation. एक और ministry भी सीगी इधर. In total 2 ministries सीगियाँ which were doing it for the first time. एक तो Civil Aviation answer आ गया. Okay, answer is Modi ji. PM Modi, most popular world leader. Right? Moving on. Next, consider the following statement. One of the causes of dementia is HIV infections which damages the brain cells. Very important question है, थोड़ा जा साइंस वाला aligned question है. Dementia disease है, उसके बारे statements पूछिया गई हैं. It affects the memory, thinking and leads to loss of consciousness. जिसके कारण patient जिड़ा है he can go in coma. Next statement we have is there is currently no treatment available to cure dementia. Okay, you say that all the statements are correct. Answer is D.
This point is very important. Currently there is no treatment available to cure this disease. Then इस disease which person अपनी memory, thinking and comprehension capacity ਜਿਹੜੀ है वो lose कर दिंदा है. Next, India's first district good governance index was unveiled recently for districts of which states? Good governance index top करने वाली state केड़ी है? My question to you. दूसरा, किस state वास्ते individually districts the good governance index ਜਿਹੜਾ ਹੈ launch ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ good governance ਦਾ question ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ someone gave answer to this. Delhi, Jammu and Kashmir, Kerala, and then we have is Gujarat, J&K. Very good. Okay. Otherwise, India the states ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ top ਕੀਤਾ ਹੈ? Gujarat. Right. Very good. Next, US scientists have recently discovered underground ocean buried beneath the surface of moon named Mimas. This moon Mimas belongs to which planet? Important science ਦੇ questions बड़े important है, नवे नवे words सुनने को मिलते हैं. Mimas was recently seen in news. What is this? Planet, dwarf planet, moon, undersea, कोई भी creature. ठीक है. Option Saturn, Jupiter, Mercury, and then we have is Earth. Okay, we already have the answers. Nice. Answer is A. This moon belongs to Saturn. ठीक है जी. याद कर लो जो अदर पर्सपेक्टिव फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं. आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो. ठीक है जी. नेक्स्ट, विच इंटरगवर्नमेंटल अलायंस इज होल्डिंग अ मेरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड नेपट्यून स्टार्क 2022 इन मेडिटेरियन सी? NATO, European Union, then we have is Eurasian Economic Union, and then we have is OECD. Okay, we have science वाले students also. Good. Answer is NATO. We are expecting NATO ਵਿੱਚੋਂ Russia, Ukraine ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ question ਆਏਗਾ exam ਵਿੱਚ. ठीक है. Constantly जो ਅਸੀਂ weekly live sessions कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ हर week issues ਦੇ ਉੱਤੇ cover होने वाले MCQs cover कर रहे हैं. पर Russia, Ukraine issues ਦੇ ਉੱਤੇ काफ़ी सारे MCQs solve ਕੀਤੇ हैं. So go attend those sessions and आने वाले sessions भी attend करो. It is on Tuesday. Okay, 10:30 AM. Next, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट रिलीज की है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021. एज पर द रिपोर्ट 2021 का जोड़ा ईयर है इट वॉज डैश वार्मेस्ट ईयर इन इंडिया सिंस 1901. ऑप्शंस 4th, 5th, 6th and then 7th. Okay, answer to this question is B, 5th. This is more important to you rather than year केड़ा है कि ये रिपोर्ट जड़ी है climate for India during 2021 की दी launch की हुई है. इन्हों launch करने वाली organization जड़ी है वो केड़ी है? This is more important question than the India दा position. ठीक है जी. Moving on. India observed पराक्रम दिवस on January 23 birth anniversary की दी mark करने वास्ते सुभाष चंद्र बोस. In 2022 किनवी फ्रीडम फाइटर दी किनवी एनिवर्सरी जड़ी है दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड? 127, 121, 125 एंड वी हैव इज 120. ओके, आंसर इज सी, 125. ग्रेट. मूविंग ऑन. द होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज रिसेंटली अनवेल्ड by PM Modi की दी birth on the birth his birth anniversary किथे? India Gate, Red Fort, Rashtrapati Bhavan, and then we have his Indian Museum. Important question on the scale of 1 to 10. This question is 10 important. Okay, we have the answers already. Answer is A, India Gate. This is the image. It will be completed soon. Moving on. थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस दिन मनाया जाता है ये भी दसो. थीम तो दिन दसना ही है. रिकवरी एंड रीवाइटलाइज एजुकेशन इन कोविड-19 जनरेशन, चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. देन वी हैव इज एजुकेशन जो कि की ड्राइवर है फॉर इंक्लूजन, एंड वी हैव इज टीचिंग इज फ्रीडम एम्पावरिंग टीचर्स. ओके, बी करेक्ट. चेंजिंग कोर्सेस, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. इस साल असी एजुकेशन ਨੂੰ ट्रांसफर फॉर्म करांगे
So this is the theme for 2022 and it is celebrated on 24th of January. Good. Next, who has become India's first UN Development Program Youth Climate Champion? Varun Sharma, Rishabh Pant, Anupam Roy, and then we have this Prajakta Kohli. We have already solved this question somewhere. D. Ray, Anupam Ray. Guess करने वाले कितने हैं? Okay. Right answers वाले ज़्यादा है. How many of you are guessing? Answer is D. Prajakta Kohli. Social media, Instagram influencer. Next, NASA Space Agency has recently unveiled phase 2 of Deep Space Food Challenge. किस और country the partnership now this is being done? Russia, Japan, Canada, and then we have is Australia. हाँ जी, वीकली में किया था. हम वीकली में काफ़ी कुछ कवर करते हैं. So if you are missing on to the weekly sessions, they are very very important. Okay, which is the correct? Okay, answer is C, Canada. NASA Space Agency's phase 2 Deep Space Food Challenge, whereby जो स्पेस विच लोग है, एस्ट्रोनॉट्स है, उन्होंने फूड किमें पहुंचाया जाएगा. ऑल दैट विल बी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कमेमोरेटिव लोगो jointly with which country to mark 30 years of establishment of diplomatic ties between two countries? Recently commemorative logo jada hai that was launched, it was with Israel to celebrate the relationship between the countries and the diplomatic ties over 30 years. ठीक है जी, बड़ी पिक्चर भी वायरल हुई सी मोदी जी दी इजरायली लोगों नाल. नेक्स्ट, which country is associated with aboriginal flag which was seen in news recently? India, China, Australia, and then we have is Pakistan. Going back to their history, aboriginal flag jada hai that was associated with this country. The recently news which देखा गया सी, it is related to Australia. Correct answer is C. Okay, moving on. Next question. ओही क्वेश्चन आ गया जो सबनों डरांदा है. Holodule uninervis, a species of seagrass, has found to be a strong activity against which disease? Once in a while missile type question, missile type नाम आएगा, पूछेंगे किदे नाल associated है. This is going to cure which disease? Cancer, HIV, dengue, and then we have is malaria. Okay, first answer we have got from Raleigh. Malaria, cancer. Oh my god, काफ़ी ज़्यादा आंसर्स आए हैं. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, इट इज गोइंग टू क्योर कैंसर. हॉलोड्यूल यूनिनर्विस वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, किदे नाल एसोसिएटेड है? कैंसर. एंड देन एक ही है, एक तरह की सी ग्रास है. मेडिसिन ना कह दियो, मेडिसिन तो बाद चो बनेगी. इट इज अ काइंड ऑफ सी ग्रास, राइट. मूविंग ऑन. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज. टॉप करने वाली कंट्री जी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नू, that is Denmark, Japan, Sweden, North Korea. Which is the country which has topped this? Okay, we have got first answer from Kavita Garg, then Nikhil Agrawal. C, you say it is Denmark. Then we have, okay, Denmark, Finland and New Zealand. We have got the chronology as well. Answer is A, Denmark. काफ़ी ज़्यादा टाइम तो डेनमार्क जरा है, it is one among the top leading countries, right? Moving on. The naval exercise Chiru 2Q 2022 was recently between 3 countries to enhance the naval drill. Which of the following is not a part of this naval drill? Important. It is held between 3 countries. तो जड़ी नहीं है उन्होंने छड़ के बाकी 3 जड़ियाँ हैं, they will be part of this. Answer is A, India. केड़ी 3 countries? China, Iran and Russia. ठीक है जी.
CIR सर, S वाला सर नहीं, C वाला सर, ठीक है. चाइना, ईरान, रशिया which is going to conduct the trilateral naval drill called Chiru 2Q22. Moving on, Gulf of Oman, very nice. Next, Ramgarh Vishdhari Wildlife Sanctuary is expected to be formally notified as Tiger Reserve before Global Tiger Summit. ਹੁਣ टाइगर रिजर्व्स अगर न्यूज़ विच है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर. ਹੁਣ रामगढ़ विश्वधरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इट वॉज सीन इन न्यूज़ बिकॉज इट इज़ बीइंग अनाउंस्ड कि ये जी है वाइल्ड लाइफ टाइगर प्रोटेक्शन एरिया विच पा दी जाएगी. इट इज़ इन इंडिया, रशिया, USA and then we have is Japan. Okay, we already have the answers. Answer is B. It is in Russia. ठीक है जी. Okay, just a second. Okay. It is in Rajasthan. ठीक है जी. It is going to be, answer is India. It is going to be A. ठीक है जी. Hope it's clear. Moving on to the next question. Which state has announced the formation of 13 new districts? Time and again state जी है अपनी announce कर दी रहती है नवी districts बनावांगे. It has announced creation of 13 new districts. It will be Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, and then we have is Uttar Pradesh. Andhra Pradesh. Okay, we have got the answers. Answer is A, Andhra Pradesh. Next, Xiomara Castro has become the first ever female president of which nation? Cuba, Honduras, Mexico, and then we have is Colombia. This country is going to have the first ever female president. Okay, answer is B, Honduras. ठीक है जी. Next, India's first Chief of Defence Staff Bipin Rawat will posthumously be honoured with which of the following awards? Bharat Ratna, Padma Vibhushan, and then none of the above. ਹੁਣ Chief of Defence ਦੇ ਉੱਤੇ it is we are expecting, what I am marking important is Chief of Defence the जेड़ा static portion है कि what is the age limit, की tenure है, ये तुसी cover करना है. ठीक है. if during the life कोई मैंने दस सकता है what is the static information related to Chief of Defence, ता it will be appreciable. Answer to this question is B, Padma Vibhushan. ठीक है. Chief of Defence news च रहा है, that is why इधर static portion important है तो डेली cover करना. right, what is the tenure and then what is the age limit, right, and reappointment वास्ते है या नहीं. moving on, next, which ministry presented its tableau for Republic Day Parade 2022? option Jal Shakti, Women and Child, Civil Aviation, and then we have is Health. Mukund Nirvane. Okay, Civil Aviation. Okay, answer to this question is C, Civil Aviation. Next, National Voters Day किस दिन मनाया जाता है? January 23, January 24, 25 and then we have is 26. My question to you, National Girl Child Day भी किस दिन मनाया जाता है? ਇਹਦਾ भी आंसर दियो. Then we have is okay, no tenure for the CDS. Okay, go on. Answer to this question is National Voters Day is celebrated on January 25th. National Girl Child Day किस दिन मनाया जाता है? January 24th, right? 24 ਨੂੰ National Girl Child Day मनाने and everyone should get right to vote and right next day girl child ਨੂੰ ਅਸੀਂ लेके जावांगे वोट पाउण ਲਈ. सो 25 ਨੂੰ ਅਸੀਂ मनाने हैं National Voters Day. ठीक है जी. दिस इज अ वे टू लर्न. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू. ज़्यादा नहीं तो 90 ਵਿੱਚੋਂ 10-15 क्वेश्चन भी दिमाग च बिठा लोगे, सैशन विल बी सक्सेसफुल फॉर मी. ओके, मूविंग ऑन. Which company is expected to unveil world's fastest
super computer by mid 2022? Meta, Google, Amazon, and then we have is Microsoft. My question to you right now, fastest supercomputer India da केड़ा है? India da and world da? Meta. Answer to this question is Meta. दो question थोड़े को मैं पूछे, fastest supercomputer of India right now and world. Param, okay, that is of India and world की जो सी गल करते हैं, which is the fastest supercomputer? Okay, Japan da, right, very good. PM Modi hosted India's first India Central Asia Summit virtually. How many countries are officially recognized? Central Asian regions, 5 countries पिछले live which question form different सी कितनी countries है? Okay, did I speak the answer? क्या मैंने आंसर बोल दिया? Okay, answer is B5, Central Asian countries. Okay जी, moving on to the next question. Consider the following statement regarding घड़ियाल्स. आज मैं घड़ियाल्स का टॉपिक जिहड़ा है ना पूरा कवर करा के जाना है. घड़ियाल्स विचों क्वेश्चन देखने को बड़ा मिलता है. तुसीं इहनूं इन्वायरमेंट का पार्ट ले लो, तुसीं इहनूं करंट अफेयर्स का पार्ट ले लो, करो. They are found only in Chambal river in India. Then population of घड़ियाल means कि जड़ी रिवर वाटर है दैट इज वेरी क्लीन एंड IUCN स्टेटस जेड़ा है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. हमने नहीं सुना, क्या नहीं सुना? अच्छा आंसर ठीक है. वी हैव ऑलरेडी गॉट द नेशंस. ओके, 2 and 3. You say that 2 and 3 statement are correct. Answer is B, 2 and 3. IUCN status very important, not endangered, it is critically endangered. As promised, we will be covering the information relating to घड़ियाल. You can see कि काफ़ी सारे areas है फ्रेश वाटर इंडिया विच केड़े एरियाज से मिलता है. These are the names: यूपी, उत्तराखंड, बिहार. देन पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इंडिकेटर है कि ये रिवर जी है वो क्लीन है. देन इंडिया हैज़ 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडिलियंस. केड़ी 3 स्पीशीज घड़ियाल. स्टेटस की है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. याद करते जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव इज मगर क्रोकोडाइल, IUCN स्टेटस वल्नरेबल. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न. दीज आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज एंड सारी कैटेगरीज कवर करनिया इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो PDF प्रोवाइड कर देंगे. देन ऑल द 3 आर लिस्टेड इन Appendix 1 of CITES and Schedule 1 of Wildlife Protection Act. This is the most ignored section. आप appendix नहीं पढ़ते, then आप schedule नहीं पढ़ते, CITES दा and wildlife sanctuaries दा respectively. Exception: saltwater crocodile population of Australia, Indonesia and Papua New Guinea are included in Appendix 2 of CITES. These are the exceptions ਜਿਹੜੇ Appendix 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ Appendix 2 ਦੀ ਹੈ. स्टेट्स याद कर लो कि केड़ी है एक्सेप्शन. ठीक है जी, याद हो गया. दिस वाज ऑल अबाउट स्टैटिक पोर्शन एंड करंट पोर्शन रिलेटेड टू घड़ियाल्स. मूविंग ऑन, द गेटवे टू हेल recently was seen in news. It is located in which country? Azerbaijan, Iraq, Kazakhstan, and then we have is Turkmenistan. Quick answers from everyone. इधर the questions I assume is very favorite type of questions. Okay, we have the answers already. Answer is D, Turkmenistan. Next, India has collaborated with which country to create 150 villages of excellence in 12 states of India? Afghanistan, Russia, Israel, and then we have is Japan. Quick answers everyone. You say it is Japan, Israel. Answer to this question is C, Israel. ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कि इजराइल नाल बहुत सारी इन लास्ट फ्यू मंथ्स डिफेंस एटसेट्रा दी चीज़ां होइयां है, पैक्ट्स होए है, वो आप सब कवर किया है. ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बना लो, जो यू विल रिमेंबर दिस. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे एंड व्हेन इज दिस डे सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन फॉर यू, स्टार क्वेश्चन. वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है? थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी,
united against leprosy, stronger tomorrow, and then we have is harder we fight. Go on. Last Sunday for January. Answer is A. United for Dignity is the theme for World Leprosy Day. Right? Moving on. Chaliye. Okay. Here as the next question. Russia and China have conducted joint naval drill. Chiru 2Q, which of the following country? Very important. हुने कीता सी 3 nations. सर याद कराया सी S वाला नहीं C वाला सर. किहड़ी 3 countries हो गया? हलवा क्वेश्चन. इदां ना कहो यार, भुख लग जानी है हलवा क्वेश्चन ते. Options: Saudi Arabia, Italy, Brazil, and then we have is Iran. Okay. रब सब देख रहे हैं, सैशन नू लाइक कर दो. ओके ठीक है जी, 3 आपां कीतियां है. सर तुहानू याद कराया है मैं, एस वाला नहीं सी वाला, चाइना, ईरान एंड रशिया. ठीक है जी. मूविंग ऑन. The 13 tiger range countries have set up the TX2 goal to double the population of tigers by which year? On the scale of 1 to 10, 11 important question. Tiger population nu double करना है by which year? गॉड के दर्शन हो रहे हैं, किधर देख लिया गॉड को? Hansen disease. Okay, scientific name. Okay, we are not getting so many answers. पेश किया जाए. आंसर इज C. By 2022 this population of tigers will be doubled. Right? चलो जी, चलिए अगले क्वेश्चन थे. C देखो डबल होना ना, 2 to 2 डबल 2022. नेक्स्ट. India has recently approved a digital work plan 2022 with which intergovernmental organization? ASEAN, BRICS, European Union, SAARC. Again मैं दस्या कि intergovernment organization दे विच India कुछ भी कर रहा है, that is important to you. So it is yes 13 range century with the so digital work plan 2022 whereby digitization the field which किमें countries जिहड़ियां cooperate करके work करनगियां. This is approved by India with ASEAN. Where is headquarter of ASEAN and how many members are there in ASEAN? Question for you, star question. ASEAN the headquarter कित्थे है and number of members in ASEAN. Next question. World's second largest steel producing nation in 2021 behind China is Japan, Australia, India, and then we have is Chile. 10 members, headquarter is in Indonesia. Very nice. दसो जी. Options ਤੁਹਾਡੇ सामने है. Second largest steel producing nation 2021 behind China. 1967 ASEAN. Very good. Answer is C. India. ठीक है जी, याद रखियो. Steel producing China followed by India. Next, Lok Sabha Secretariat has launched the official mobile application of Parliament named as dash to make live proceedings accessible. Digital Sansad, Digital View, Sansad Aapke Haath, Digital App, live proceedings. Simple question or we call it halwa question. What is the answer? Okay, we have the answers. Answer is A. Digital Sansad app. Who among the following has authored the book title A $10 Trillion Dream? Rahul Raval, Subhash Garg, Shantanu Gupta, and then we have is V.L. Indra Dutt. 10 Trillion Dream. It is by. Okay, first answer we have got from Harpreet Kaur. No, Kavita Garg. Okay, answer to this question is B. Subhash Garg. ठीक है, associated with 10 trillion dream. Moving on, next question. Who has been appointed as new chief economic advisor?
रिविजन क्वेश्चन फॉर यू हमने थोड़ी देर पहले किया. आई एम नॉट गोइंग टू रीड द ऑप्शंस, जस्ट मार्क द आंसर, ऑल योर्स. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया इज, फोटो भी दिखाई थी. आंसर इज बी, वेंकटरमन अनंतन नागेश्वरन. राइट, मूविंग ऑन. अबाउट बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, important, very very important. On the scale of 1 to 10 this is 20 important. Why? उन्हें पता लग जाएगा. बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, it is the largest natural flood wetland plain located in Uttar Pradesh. State is very important कि ये उत्तर प्रदेश में located है. Then it serves as a natural habitat for state bird, that is sarus. Options. If anyone can tell me Bakhira Wildlife Sanctuary news which क्यों है? Why is this question in current affairs? You say that both the statements are correct. Why not this की statements correct क्यों है? Why is this seen in news? Recently added two wetlands. Two wetlands have been added to the wetland list. One is in Uttar Pradesh, Bakhira Wildlife Sanctuary. Second केड़ी है? एक question. Second question for you is World Wetland Day जड़ा है अपा किस दिन नू celebrate करते हैं? हाँ, go on. Next question. On the occasion of World Wetland Day, Khijadiya Bird Sanctuary of Gujarat, Bakhira Wildlife Sanctuary of UP जड़ी है that have been included, and the National Wetland Decadal Change Atlas was also launched. Very important. 2022 they okay 2nd of February correct 2nd February 2022 the occasion te National Wetland Decadal Change Atlas भी launch की गई सी. ठीक है जी, this is important. if new thing is being launched किसी भी organization के तहत या फिर किसी भी मीटिंग के अंदर, that is important. रामसर तो although more important है, wetlands भी important है. moving on. Central theme for Economic Survey 2021. वेरी सिंपल, हलवा गुलाब जामुन सारा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं. थीम की है इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 2022 दा. यू नीड ऑप्शंस फॉर मी. अजाइल, सोशलिस्ट, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न अप्रोच, एंड देन वी हैव इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच. आंसर इज ए, अजाइल अप्रोच. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑफ काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग hydrogen into natural gas system has been launched by JAIL in which state? Gas Authority of India Limited द्वारा लॉन्च किया गया है. हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा नेचुरल गैस सिस्टम्स नाल. ठीक है जी. इट इज इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, एंड देन वी हैव इज दिल्ली, MP. करेक्ट आंसर इज ए, MP में होगा दिस मिक्सिंग हाइड्रोजन natural gas. Which player has been awarded World Game Athlete of the Year Award 2021? Important. Title मिले PR Srijesh, Mary Kom, PV Sindhu, and then we have is Sania Mirza. Go on, quick answers everyone. Okay, answer is A, PR Srijesh. Next. Which country launched Hwasong 12 mid-range ballistic missile? Important. India, China, North Korea, Australia. इस तो पहला जड़ा current affairs session सी, someone gave this information to us in the additional information. It is launched by North Korea, Hwasong. Next, which institution released death penalty in India report? Penal International, National Law University, National Literacy Agency, then Amity International. North Korea was the correct answer. याद रखियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करते सो कर दिया. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट. टेक दोज क्वेश्चंस वेरी सीरियसली. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. जिन्होंने गेस किया सी एक बार हाथ खड़े करियो. हाउ मेनी ऑफ यू गेस्ड दिस एंड हाउ मेनी ऑफ यू न्यू इट? Next, PM Narendra Modi addressed the 30th Foundational Day program of National Commission for Women on January 31. Who is the chairperson of National Commission for Women? Surekha Sikri, Rekha Menon, Soma Mondal, and then we have Rekha Sharma.
Okay, we knew it. Very good. Answer to this question is D, Rekha Sharma. Moving on. Next question. Which is first Indian sport established to gain unicorn status? We have done this in Pehli wali current affairs series. Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, then we have is Punjab Kings. We have already done this question. CSK, Chennai Super Kings. Which union ministry launched service e-health assistance and teleconsultation? सेहत इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री जी है वो केड़ी है? Quick answers everyone. I am just winding up the session very quickly. We have solved n number of questions. It is B, Ministry of Defence, सेहत इनिशिएटिव. ठीक है जी. It will be providing डिफेंस के लोगों को हेल्थ जी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कीतियां जाएंगियां. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नॉमिनेट किया है सेक्रेट असेंबल्स ऑफ होयसाला टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. किथे लोकेटेड है टेम्पल्स? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड देन वी हैव इज कर्नाटका. वेयर इज दिस टेम्पल लोकेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क दिस इंपॉर्टेंट. ठीक है, सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ के पता लग जाती है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. आंसर इज डी, केरला. ठीक है जी. कर्नाटका, सॉरी केरला नहीं, कर्नाटका. थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है. व्हाट इज द थीम? ऑप्शंस आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर. डी इज द करेक्ट आंसर. कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? कैंसर कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की गई है February 4, 5th, 6th और 7th. व्हेन इज दिस सेलिब्रेटेड? आंसर इज February 4th. थीम देख लो, क्लोज टू केयर गैप. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ 60 करोड़ जी है की गई है हर घर नल से जल स्कीम. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 19 ਵਿੱਚ 2019. ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਨ ਹਾਊਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2024 तक प्रोवाइड करना है टू एवरी रूरल होम. वेरी क्विक आंसर्स. आंसर इज डी. सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ईयर इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, याद रखियो. नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड देन वी हैव इज जापान. लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. Answer to this question is A, United States. I am running, you also run with me. Answers दो. सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किस कंट्री ने किया है? रशिया, जापान, USA एंड देन वी हैव इज जर्मनी. रन विद मी एवरीवन. इट इज C, USA. नासा प्लान कर रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करेगा बाय March 2030. Japan January 2031, December 25 सॉरी एंड January 2026. गिरते रहेंगे लेकिन भागते रहेंगे. आंसर इज बी, January 2031. गेस वर्क ज़्यादा चल रहा है. 2 न्यू साइट्स रामसर विच ऐड की गई हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. फटाफट आंसर्स दे दो. ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ सामने है. Recently 2 new sites were included in this wetland. Answer is simple. We have just done 1 and 3, Makhira and Khajdiya. States याद रखना, गुजरात and UP. Very important. Tableau which I selected the best among the top 12. Last question for your current affairs session. Are we done here? It is A, Uttar Pradesh. पहला भी डिस्कस किया है. With this we end the session. I hope the session was enriching for you all. Revision the question होए है बहुत सारे, we have already covered. So I'll see you at 4 now. जिथे आपा कोस्टल इंडिया का जो कोस्टल पार्ट है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे, which will be followed by a quiz for you all. ठीक है जी. See you all. Have a good day. Bye.